बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का जो नाम है वो प्रोसेस कॉस्टिंग है। ठीक है जी। प्रोसेस कॉस्टिंग का ये चैप्टर हम करेंगे जो कि हमने पार्ट सी जो है चैप्टर 7B तक स्टॉप किया था। अब हम यहाँ से दोबारा उस पार्ट सी को कंटिन्यू करेंगे और बाकी के 4 चैप्टर्स इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे। सो किंजा, लेट्स स्टार्ट। कोई क्वेरीज हैं अभी तक किसी चैप्टर की, कोई क्वेश्चन? तो मैंने वीडियो देखा तो मुझे एक चीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया द ग्राफ्स में। सो आई वाजंट एबल टू अंडरस्टैंड कि ग्राफ्स में एक्चुअली चल क्या रहा है। मैंने 2-3 मरतबा वीडियो वो जो है फॉरवर्ड करके पीछे करके देखी, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मतलब समझ आया बट इतना नहीं। ओके, ग्राफ हम कौन सा कर रहे थे? हम कर रहे थे वेरिएंसेस के ऊपर, राइट? यस। हम लास्ट वेरिएंसेस कर रहे थे। तो वेरिएंसेस का जो ग्राफ है, बेसिकली ग्राफ के से रिलेटेड सम्स बहुत ज्यादा आते नहीं है, बट आई जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन फॉर यू। ओके, जस्ट अ मिनट। तबीयत कैसी है तुम्हारी? या इट्स बेटर, थैंक्स। Okay. आपने थर्सडे को क्लास ली थी? थर्सडे को ली थी। थर्सडे को ली थी मैंने। वेडनेसडे को ली तो थी। ने तो रिकॉर्डिंग तो नहीं आई मेरे पास। आई जस्ट सॉ द वेडनेसडे वन। अच्छा, मैं देखती हूँ। आई जस्ट चेक इट। ऑलराइट, तो ये ग्राफ्स थी बेसिकली। ये ग्राफ्स में कुछ भी नहीं है सच देखने वाला, मतलब जो मैं बताऊं आपको कि कोई बहुत बड़ा इसमें सम नहीं आने वाला। ठीक है। यूजुअली वेरिएंसेस का जो सम्स होते हैं वो ज्यादातर इस तरह के आते हैं, आपके प्रैक्टिकल सम्स होते हैं, ग्राफ रिलेटेड नहीं होते। मगर यस, वी कांट इग्नोर एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस, सो वी विल जस्ट गो थ्रू इट वंस कि क्या हो क्या रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपली यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है। ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स है प्रोड्यूस्ड एंड यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट है। हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट की लाइन। ठीक है, लाइन ए। और यहाँ पे हमारा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड की लाइन है, लाइन सी। ठीक। अच्छा जी, उसके बाद हमें क्या बताया जा रहा है कि ये लाइन बी क्या है? ये स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट है, ये लाइन बी है। ओके। नाउ यहाँ पे अब नीचे जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इन्होंने फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस फाइंड आउट किए। कीपिंग दिस ग्राफ एज द क्वेश्चन, लाइक ये जैसे क्वेश्चन आया आपके पास ग्राफ का, और ये सारा, ये फर्ज करो एग्जाम में क्वेश्चन आया और एग्जाम पूछ रहा है, एग्जामिनर पूछ रहा है कि जरा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो निकालो। तो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट इट? सिंपल, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। नाउ इन दोनों का डिफरेंस हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड आउट? यू हैव टू सी लाइन ए इज फॉलिंग अंडर 15,000, line C is falling under 20,000. So the difference between 20 and 15 gives you 5,000. Now it's up to you. You have to check whether it's adverse or it's favorable. You thought that fixed overhead cost would be 15,000, but in reality, it turned out to be 20,000. So is it a good news or a bad news? It's a sorry, can you please repeat the question? You budgeted, you expected that your fixed overhead cost would be 15,000. Okay. But in reality, the fixed overhead cost turned out to be 20,000. So there's a variance of 5,000. So is this a good news or a bad news? Good news. Why good news? It's a cost.
You, Oh, okay, nahi, then it's a bad news. yes, it's a bad news because you thought your cost would total up to 15,000, but in reality it totaled up to 20,000. So therefore it's a bad news. And how you found out? You found out through the graph. What you did, you just found out the variances, and that's how you did it. So simple A minus C is giving you fixed overhead expenditure variance. Moreover, the question might ask you that find out the fixed overhead volume variance, and the graph is given. Then what will you do? Then you will just do D minus A. Now what is D and what is A? So here, your A is the same 15,000 and your D is this point. Now this point is falling where? You have to see that. This point is falling 3,500 units and it is costing 17,500. So D minus A, that means 17,500 minus 15,000 will give you fixed overhead volume variance. Now are you getting it? Yes. Yes. So now you thought that you would be producing $15,000 worth quantity, right? But in reality, how much did you produce? 3,500 units, which costed 17,500. So is it a good news or a bad news? It's a good news. It's a good news. So that's how you get 2,500 favorable. Now, same way, you have to find out whether it's under absorption or over absorption. So how are you going to do that? Fixed overhead incurred, line C cost, 20,000, minus fixed overhead absorbed, point D cost, 17,500. So it is 2,500 under absorbed, right? Because you thought that it would be $20,000, but when it came to point D, you actually incurred 17,500. So 2,500 was under absorbed, C minus D. Okay, so that's how they have solved it. And the similar graphs have been shown again and again, similar graphs with the same lines, line A, line C, and line B, okay, point B. And they are asking you to find out different things. Budgeted fixed overhead cost, and they are asking you to find out standard fixed overhead cost, actual cost, overhead absorbed. So you can just go through it. There is no harm in it because the formula is the same. Fixed overhead expenditure variance, A minus C, you get it. Fixed overhead volume variance, D minus A. And then total fixed overhead variance, C minus D. So that's how you're going to do it. Then there are two more graphs that they are showing, that this is the graph for under absorbed, this is the graph for over absorbed. Over here, if you see that there are no numbers given, no numbers. Okay, so there are no numbers given. So actually, if you look at them, both look the same with just one minor difference, that over here you see actual fixed overhead, over here you see budgeted fixed overhead. Whereas over here you see budgeted fixed overhead is on the top and actual fixed overhead is on the bottom. Okay, so this is where the difference is being shown. Under absorbed. What is the concept behind under absorbed? कि मैंने सोचा, I expected that my fixed overhead expense would come to be 10,000. Okay, but in reality, what happened? The actual bill or actual cost came up to be 12,000. So that means 2,000 extra. Right now, this 2,000 extra, I did not incorporate it into my cost of the product. I did not, because I expected this much. So I incorporated this much only. So that means I have incorporated less cost than in reality I should have been incorporating. तो 2000 से मैंने क्या किया है, अंडर अब्सॉर्ब है मेरे गुड्स, मेरे जो भी मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ जिन भी प्रोडक्ट्स को, उसमें 2000 की कॉस्ट शामिल नहीं है, मिसिंग है. क्यों मिसिंग है? अंडर अब्सॉर्ब्ड है. क्यों अंडर अब्सॉर्ब्ड है? क्योंकि मुझे लगा था कि सिर्फ 10,000 का खर्चा आएगा, मगर इन रियलिटी 12,000 का खर्चा आ गया.
तो अब जो भी खर्चे आएंगे अल्टीमेटली तो हमें प्रोडक्ट के उसमें डालना है ना, प्रोडक्ट की कॉस्ट में डालनी है सारे खर्चों को। तो अगर मैंने 2000 कम खर्चा डाला हुआ है, दैट मीन्स माई कॉस्ट इज अंडर अब्सॉर्ब्ड, इट डज नॉट इंक्लूड दिस 2000 रुपीज, this $2000, it does not include it. Is this point clear, that what is the concept behind under absorbed? Yeah, that's clear. Okay, so now this under absorb is graph के through कैसे हमें show हो रहा है कि expectation is 10,000, actual is 12,000. Expectation is lower, expectation is lower, actual is higher. So the same thing has been depicted in the graph, that the budgeted or expected is lower, that's why it is being shown on the lower line, and actual is higher, and that's why it's being shown on the higher line, and therefore this is called the graph for under absorbed fixed overheads. Now if you look at the over absorbed, what is the concept behind over absorbed? That I expected that my electricity bill would come 10,000. But in reality, in actual, the bill came to be 8,000 only. So this means that I have added 2,000 cost extra into the product that I'm producing. Yes. Extra that I have added or incorporated into the cost of the product, which shouldn't have been added. So that means this is over absorbed. What are you seeing here? That expectation is higher and actual figure is low. Actual is low. So the same thing is being depicted over here in the graph, that actual is lower, budgeted is higher. Okay, I got it now. Okay. Now the same things have been shown again and again, and there are no figures. So there is no point discussing all these again and again. Whereas you just need to keep these in mind, but if you know the logic, then these can be easily remembered. Okay, so that's all about the graphs. Okay, let's continue with process costing. Yes, we will start with process costing, and it's on page 277. Just a minute. All right. Process costing. What do you understand by this term, process costing? वो कॉस्ट जो ऑलरेडी प्रोसेस में हो, समथिंग लाइक दैट, मतलब नेम से तो यही समझ आ रहा है. ओके, ऑलराइट. या फिर वो कॉस्ट जो हम प्रोसेस का कोई भी मटेरियल बनाने में जो यूज होती है, हम उसे कह सकते हैं समथिंग लाइक दैट. Okay. Let's just start. प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली क्या होता है, नाम से लग रहा है आपको कि ठीक है कोई कॉस्ट जिसको प्रोसेस किया जा रहा है, बट दरअसल ये वो प्रोडक्ट है कि जिसको प्रोसेस से गुजारा जाता है. ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है? रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल इज बीइंग gone through or is being taken through a process, and after being taken through the process it turns out to be a finished good.
ओके, सो रॉ मटेरियल का सफर रॉ मटेरियल से शुरू होता है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, फिनिश गुड ऐसे ही तो नहीं बन जाता ना। अब इसकी हम अगर बेसिक सी मिसाल लेते हैं कि घर में दही कभी जमाई है, कभी घर में दही जमाई है? हाँ। यस, सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द योगर्ट? उसमें मिल्क एंड दही चाहिए होता है हमें जमाने के लिए, फिर उसे यस, डालते हैं, समथिंग ऐड करते हैं, फिर उसे रख देते हैं फॉर अ टाइम। यस, सो बेसिकली क्या कर रहे हो आप, दूध को पहले उबाला जाता है, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द बॉइलिंग पॉइंट वी विल लीव इट टू कूल डाउन टू सच अ टेम्परेचर where it remains warm, not cold but it remains warm, not very hot, but yes, a good warm milk. Okay, and then what we do, we add 1 teaspoon or even less than that yogurt into this milk and we dissolve it. Okay, and then we wrap it up with a cloth and we keep it somewhere where there is warmth. Okay, and the next day, after 4 hours, 5 hours minimum, when you check, it is being converted into yogurt. And finally जब आप सुबह उठते हो तो देखते हो दही जम गई. Now what is this? This is the process. And what was the milk? The milk was the raw material. Okay, the raw material is also called input. Okay, input is being taken through a process and it converts into the output. Now the question over here is that भाई ये इसमें तो सिर्फ एक ही प्रोसेस था ना, चलो 2 प्रोसेस थे, पहले दूध उबाला, फिर उसमें दही डाली, फिर उसको रखा, there were 2 stages only. Okay, 2 stages. But in making many products, there are not only 2 stages involved or 1 stage is involved, but many stages or many processes. Like for example, if you take car, if you see the manufacturing of the car, that first the metal, the raw metal is, shaped into the car structure. And then the leather seats, the seats are being manufactured separately. Then the engine is manufactured separately. And then all these parts are brought together and assembled together. Once it gets assembled, then it is painted. It is, the last finishing touches and all. That's this whole thing is a process of manufacturing a car. And that car, the raw material, the input of the car goes through many processes. Then you can see the final shape, final good, the final product in front of you, which is a car in which you sit and you go on a long drive, and we don't even think about that, so much of process and the back end work that has been put into to make that one single car. Now, Miss Isha, I cannot hear you. can you hear me now? Hello. Now, the thing is, in this process costing, why are we learning this process costing? We are learning this so that we can find out the cost of a car, of one car, no matter how many processes it has gone through. So each process has a cost. Each process has a cost. Kinza, can you hear me now? Hello? Kinza, I cannot hear you, but can you hear me? Yeah, now I can hear you. इससे पहले कुछ भी आपने बोला, मुझे स्टार्टिंग से जो इनपुट आपने कहा था प्रोसेस के बारे में आप समझाए थे, उसके बाद मुझे आवाज बहुत कट रही थी, उसके बाद तो बिल्कुल ही गायब. ओके, सो इनपुट जब जाता है तभी, इनपुट जब प्रोसेस से गुजरता है तभी वो आउटपुट की शक्ल इख्तियार करता है, इन विच आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ कार. If you just wonder that how, if you just can watch a video on YouTube about how a car gets manufactured, then you will see that the car goes through many processes.
especially the input and the raw material with which the car is made, like the metal and all, the engine, the leather seats, the cushions, they all go through so many processes to turn out into the final product you actually see when you sit in a car. And when we use this car, we don't even think about the process, the back end process, and so much of hard work and effort has been put into to get this shape and to get this utility out of the raw material, metal, leather, and an engine, right? So combining all of these together, combining all the input together, making it go through the process, you get the output. And here in this chapter, we are going to learn that how to cost for such a product, which goes through so many processes. Okay, so we will be doing these topics: the basics of process costing, losses in process costing, losses with scrap value, losses with disposal cost, valuing closing work in progress, valuing opening in work in progress, FIFO method, and then weighted average cost method. Now, please read the definition. Yes, please read the definition, Ginza. Ginza, can you hear me? Hello, Miss, are you there? Yes, I'm here. Can you hear me? Yeah, I can hear you now. Okay, I'm just turning on my hotspot so that there is no issue. ठीक है, आवाज आ रही है? Okay, please read this definition. The definition? Yes. Okay, process costing is a costing method used where it is not possible to identify separate units of production or jobs, usually because of continuous nature of production process involved. All right. Now, अब आपको ये देखना है कि भाई ये प्रोसेस कॉस्टिंग में आखिर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन हमें बता रही है दैट नंबर 1, इट्स अ कॉस्टिंग मेथड, and number 2 is the costing method for those products which cannot be identified separately, which cannot be identified separate as a separate unit of production. Like I gave you the example of a car. Like if you just take out the seat of the car, can you sell that? Like, will it really make sense buying a seat, just a car seat, separately? No, right? No. Exactly. Same way, if you just take out the engine and you say, okay, I'm selling the engine it's for sale, car engine for sale. Like it will really not make that much sense to the final customers, to those customers who actually use the car. So that's what process costing is all about. Moreover, if we take some more examples like oil refining, paper manufacture, foods and drinks, chemicals, or medicines, where medicines are manufactured, the pharmaceutical companies. So the medicines, can you just separate one drop of medicine from the another drop, or one tablet from the entire pack of tablets? You buy a Panadol tablet, you get a pack of like 8 or 10, 12, right?
like this. Can you just sell just one tablet like that open? No, right? So No. it's a package. It's a package, and it goes through a process. So you need to know how to do the costing of such products. Like for example, cold drink, you cannot sell the cold drink, one drop of cold drink, you cannot sell like that. No, one glass of cold drink, no, you cannot sell like that. You have to sell either 1 liter, half a liter, or 1.2 liters, like that. So you cannot separate the units. And the third characteristic is that it is continuous in nature. It is continuous. Paper, it is continuous in nature. Drinks, food, medicine, it is continuous in nature. You cannot separate one drop from another drop. You cannot separate, one bit of paper from another bit of paper. It's not possible. It's like, even if you do it, your costing, you won't be able to find the cost of it. You have to find the cost of the book together with 120 pages, right? You cannot cost for one page each. This is the package. This is not the package, one page package. No, this is the package. This is the package. You cannot cost separately. Now, features of process costing. Please read. A, the output of one process becomes the input to the next until the finished product is made in the final process. Right. So the output from one process becomes the input for the next process. This is but obvious. Like if I tell you that biryani, okay, what is the first step of the biryani? The first process, you cut the onions, okay, then you put it in the fryer, you fry the onions. That's the second step. The third step, Yeah. you add maybe some garlic ginger paste. Third, fourth, Yeah. okay, so now these are the stages. These are the different stages. You cut onions. The onions were the raw material, and the output from that process is that you get the onions fried to golden or reddish, right? Now that golden or reddish onions become the input for the next procedure, in which you're going to add ginger garlic, or you're going to add some tomatoes, or you're going to add some, yogurt. And then when that thing gets a little bit cooked, then you add chicken or some potatoes, like, you add them after the stage 2 or after the stage 3. And in the final stage, when the entire masala is ready, then in the final stage you add chawal and then you give the dum. Okay, तो ये क्या हो रहा है? एक प्रोसेस से निकला हुआ आउटपुट दूसरे प्रोसेस के लिए इनपुट बन रहा है, और दूसरे प्रोसेस से निकला हुआ आउटपुट तीसरे प्रोसेस के लिए इनपुट बन रहा है. So that is how it works in process costing. Next. Read. B, the continuous nature of production of many processes means that there will usually be closing work in progress, which must be valued. In process costing, it is not possible to build up cost records of the cost per unit of output or the cost per unit of closing inventory, because production in progress is an indistinguishable homogeneous mass. Right. क्या कह रहे हैं? इसमें लिखा है not getting it. Continuous nature, the same thing which we just discussed about, that continuous in nature means like water. Can you sell Kinza, one drop of water, to anybody? Tell me, I'm asking you, one drop of water, can it be sold to anyone? No. No, right? So one drop cannot be sold to anyone. Sold, yeah. Water is continuous in nature, yes or no? Are you understanding this concept, continuous in nature? Yeah. Right? Now I'm getting it. It is fluid, it is continuous. You can't separate one drop of water like that. Okay, you just can't separate it and then
find costing of it and then you sell it. No, you can't do that. It has to be a glass of water. It has to be 1 liter of 1 liter bottle. It has to be half a liter bottle. Like in liters, you have to do that. You can't just separate it. Like you separate, you can sell a pen, a single pen separately, right? That's 1 unit. But 1 unit of water is 1 drop. Yes or no? But you Yeah. sell it, you can't cost for it. So that's what they're trying to do, that these kinds of products which go through processes are basically continuous in nature or mostly continuous in nature. And therefore, it means that the closing work in progress, which must be valued, it has to be valued. Every closing progress has to be valued. In process costing per unit of output or the cost per unit of closing inventory, because production in progress is an indistinguishable homogeneous mass. That is what they are saying, that continuous means, another word for continuous is indistinguishable homogeneous mass. Homogeneous means continuous, mass means of course that thing, whether it's water, whether it's oil, whether it's lotion. You can't, just separate it. It is continuous in nature. The third feature, please read. There is often a loss in process due to spoilage, wastage, evaporation, and so on. Yes. Now, when you make the input or the raw material go through a process, there is some kind of a loss. It might be because due to spoilage, it might be due to wastage, it might be due to evaporation. Like for example, you're going to make biryani and some of your onions will get burnt. And you know that some of them will get burnt, so I will just remove them. And you know that some of the, when you add the yogurt, some of it will evaporate. You know that when you're going to boil the rice, some of the rice might fall or the water might come out of the vessel. You know when you're making tea, it goes through a process. First you put the water on the stove, it boils, 10% of it evaporates, then you add 1 teaspoon of tea, then 5% of it evaporates again, and then you add the milk finally, and then you finally make cups. Maybe if you want to make 5 cups of tea, you add how many cups of water? 6 cups, because you know that 1 cup will be evaporated. So if I want to make 5 cups of tea, I need to add 6 cups of water, or maybe 3 cups of water, 3 cups of milk, then it will make up to 6 cups. And you know that. That's why you're adding some extra raw material into the process, right? The same thing happens in big factories and companies. They know that some of it will get destroyed through spoilage, through wastage, through evaporation. They will be lost. So there are 2 kinds of losses: normal loss, which is expected, and abnormal loss, which is not expected. We are going to go through these 2 topics very soon in this chapter only. So the normal loss is basically the wastage which you have expected before you have started the process. काम शुरू करने से पहले आपको पता था कि ये होना है. चाय बनाने से पहले आपको ये पता था कि आपका कुछ पानी इवेपोरेट हो जाना है. That's why accordingly you measured the cups of tea and you added the water and milk accordingly. आपको अंदाजा था. एबनॉर्मल लॉस में आपको अंदाजा नहीं था कि आप टीवी देखते देखते, ड्रामा देखते देखते भूल जाओगे कि मैंने तो चाय चढ़ाई हुई है, और वो 5 कप की जगह उबलते 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 अब सिर्फ 2 कप रह गए. So that was the wastage which you did not expect because you were just so tired. Maybe you fell asleep, or maybe you were watching drama, you got carried away and you completely forgot about the process you were making your raw material go through. So that was abnormal loss. Next, please read. Output from production may be a single product, but there may be also may also be a byproduct or byproducts and or joint products. Yes, once you have
taken your raw material through a process, there is a chance that you might get a byproduct. Now over here, how can you explain this? Can you give me an example for a byproduct? What is a byproduct? For a byproduct, Okay. Do you know what is a byproduct? yeah, I think मैं इस term को मैंने पढ़ा है, but ये कि अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा मुझे. Alright, so byproduct is basically you don't have an intention to produce this product. Your intention is to produce something else, but you get this product as a bonus, extra. And the famous example or the best example is the yogurt. If I want to make yogurt, I use milk, I ferment it, and I make the yogurt. What am I getting as a byproduct is the malai. And it's up to me whether I use the malai like just for eating, whether I use this malai to add it to my tea, or whether I use this malai to store it and then in future I make ghee out of it when I collect a good amount of malai. So I can make ghee out of it. So all depends upon my intention, that what was my intention. Was my intention only to make the yogurt? If my intention was that नहीं सिर्फ दही चाहिए, तो फिर मलाई is your byproduct. If your intention is नहीं दही भी जमानी है, मलाई भी चाहिए, क्यों? मलाई जमा करके घी बनाऊंगी, then that it becomes your joint product. There is just a hairline difference between these two. Okay, when your intention is to get both, then it will be called your joint product. When your intention is to get only one, then the other one becomes your byproduct. Next. What if कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाए लेकिन उसमें हमें लॉस हो, so then फिर वो क्या कहलाएगा? अगर हम कोई like जैसे कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और चीज सही निकली, बट ये कि उसमें नॉट अप टू द मार्क, तो फिर वो क्या कहलाएगी? Yeah, if it's not up to the mark, that means it's not meeting the standard. Now it's up to you because the decision lies with the owner. अगर ओनर ने कहा कि नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी में नहीं कर सकते, बिरयानी में अगर नमक ज्यादा डल गया है, हम उसको नहीं चलाएंगे, सबको वेस्ट करो, तो वो वेस्ट कर देगा, आपका लॉस है. लेकिन अगर ओनर ने कहा नहीं भाई, रिस्क को वेस्ट नहीं करते, नमक ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, फीका दही डाल के खाया जा सकता है, या और चावल उबाल दो, चावल उबाल के बिरयानी में ऐड कर दो तो नमक बैलेंस हो जाएगा, तो ये कर लो. तो अब इट्स अप टू द ओनर कि वो कैसा ट्रीट करता है उस सिचुएशन को. अगर फर्ज करो एक कंपनी है, वो कुर्सियां बनाती है, चेयर्स बनाती है, और अभी अभी नया लेबर हायर किया है, तो लेबर जाहिर है शुरू में सीख रहा है, तो पहले 2-3 प्रोडक्ट तो बेकार ही बन रहे होंगे, डिफेक्टेड बन रहे होंगे. फिर चौथा उसने बनाया, चौथा प्रोडक्ट उसका ऐसा बना कि हाँ, इट वाज अ कुर्सी एंड इट वाज क्लोज टू द स्टैंडर्ड, बट इट वाज स्टिल नॉट अप टू द मार्क. ठीक है, अब ये अगेन ओनर की चॉइस है. पहला 3 तो उसने लॉस कर दिया, उसने जाया कर दिया, उसने कहा कि क्या जरूरत है, हम अभी ये सीख रहे हैं और पहला 3 तो हम बेच नहीं सकते मार्केट पे बिकॉज दे आर कम्प्लीटली मतलब बहुत डिफेक्ट है उसमें, वो सीख रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा बना रहे हैं. चौथा फिर भी हम यूज कर सकते हैं, मगर हम अपनी ब्रांड का नाम Hello, I can't hear you. मगर हम अपने ब्रांड का नाम खराब नहीं करना चाहते. So therefore, we are not going to use it. We are going to scrap it. Hello. Hello, can you hear me? Can you hear me now? Hello.
Are you there? Sorry, I wasn't able to hear you. अभी ठीक है? अभी आवाज आ रही है? Yeah, अब आ रही है. Okay, so what were we talking about? We were talking about you asked me a question that अगर up to the mark नहीं बनेगा तो क्या करेंगे? It depends upon owner. उसकी मर्जी, वो चाहे तो उसको वेस्ट कर दे, वो चाहे तो उसको यूज कर ले. It's up to the owner. So I was saying that you hire a labor and that labor doesn't know how to make the chairs. So the first 3 chairs he makes is an experiment. He's learning. So of course, these 3 chairs he can't use to sell. But the 4th chair is a good normal chair, but not up to the mark. So 4th chair, now it all depends upon the owner. अगर owner चाहे तो इसको accept करे, owner चाहे तो इसको भी scrap कर दे, जैसे कि पहले 3 को किया. तो अगर ओनर कहते हैं नहीं, ब्रांड में मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड में नो कॉम्प्रोमाइज, आई डोंट वांट टू वेस्ट दिस, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्टैंडर्ड एंड देयरफॉर आई एम गोइंग टू वेस्ट इट. ओके, तो 5वीं चेयर बनाओ. Okay. लेकिन ये है कि वो स्क्रैप के अंदर हम चीजें देते हैं, काफी चीजें ऐसी होती हैं जो स्क्रैप में भी सेल आउट हो जाती हैं, तो क्या वो भी रिकॉर्ड होते हैं इसके अंदर? यस, वो भी रिकॉर्ड होता है, वो भी हम देखेंगे, सीखेंगे. अभी हम पहले लॉसेस का सीखेंगे, देन स्क्रैप एंड डिस्पोजल कॉस्ट. Okay, the first step that we are going to see now, that process account. How does it look like? How does it a process account, T account look like? It looks something like this, and you have to note this down, that on debit side, all the input things will come on the debit side, will be recorded on the debit side, whereas all the output will be recorded on. Miss Isha, I cannot hear you. Hello. Hello. Dear, I don't know what's the problem, like why you can't hear me. So just let me continue so that you can watch the recording. Okay? Okay. So on the debit side, there are input materials you have to record on the debit side, whereas output you have to record on the credit side. Okay, so that's for process 1. Process 2, again, same thing. ये चीजें फिक्स रहेंगी, ऐसी Fixed रहेंगी, मतलब फिक्स होंगे ना ये तो? Yes. Okay. Okay. Next, now the framework comes. Now, what is the framework? Framework means your procedure, how to do the process costing. What is the procedure? So the first step is to determine output and losses. That's your first step. First step, determine output and losses. What is the output? What is the loss? Step 2, calculate cost per unit of output. You have to calculate the per unit cost of this output and this loss and work in progress. Step 3 is to calculate total cost of output, losses, work in progress. And step 4 is the complete accounts, which we just saw a while ago. So this is that easy. You just need to follow the steps. Nothing big, nothing complicated, just follow the steps. And it's all about the output, losses, work in progress. That's it. You have to find out how much output, how much losses, first step. Second step, you have to calculate the cost of output, the cost per unit of losses. And the third step is find the total cost. And the fourth is the complete accounts. That's it. So we will just go through a sum and we will see how it works. So let's start with a sum. Okay, before we jump on to the sum, we just need to understand a few things about the losses. We have already learned that we have 2 kinds of losses, normal loss, abnormal loss, and we know the difference. Now there is a third kind, abnormal gain. Now, what is this abnormal gain, Kinza? Can you just read and explain it to me? Abnormal gain is the gain
resulting when actual loss is less than the normal loss or expected loss and it is given a negative cost. Like वो कॉस्ट के हमने जैसे कि एक्सपेक्ट किया कि इतना हमें लॉस होगा लेकिन उतना नहीं हुआ, उससे थोड़ा सा कम हुआ, तो आई गेस दिस Exactly. 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 This is the thing. You expected that 10 units will get lost, but in reality, only 5 units were lost. So that 5 units you gained. That's an abnormal gain. Okay. Okay. Coming to the sum, we have an example with us, and we will try to do this example. Okay. So suppose that the input to process is 1000 units at a cost of $4,500. Normal loss is 10% and there are no opening or closing stocks. Determine the accounting entries for the cost of output and the cost of the loss if actual output were as follows. Actual output 860 units, part A. Actual output 920 units, part B. So what you need to do, you just need to follow the framework, that 4-step framework. Step 1, identify output and losses. Step 2, calculate cost per unit of output and losses. Step 3, calculate total cost of output and losses. And step 4, complete accounts. So let's start with 860 units. Okay. So the input is 1000. Okay. Input is 1000 units and the output is 860. So the first step is done already, that the output is 860. And what about the loss? What about the loss? How many units are you losing over here? You're putting in raw material for 1000 units and you're getting out only 860 units. So how much loss are you bearing? We are going to subtract 1000 को हम 860 से minus कर देंगे, then we're gonna get the answer. Yes, and what is it? It is 140 units. Okay, that's your loss. Now you have to see that this 140 units of loss, is it a normal loss or an abnormal loss? So you have to check out in the sum, and the sum says that the normal loss is 10%. So 10% of 1000 is how much? 100. 100. So therefore 100 units were the normal loss, but in reality, how much loss did they bear? 140 units. So therefore, abnormal loss is of how many units? 40 units. Does this make sense? Hello. Oh, does this make sense? Actual loss is 140 units. Your loss is said to be 10%, which is 100 units. So there more than 100 units, because the actual loss is 140. So therefore 40 minus 100 becomes your abnormal loss. Yes, it's abnormal loss. Right. Abnormal loss. So now what is this? This is your first step done. Because in the first step, you had to what? You had to find out the output and the losses. So first step done. Now the second step, calculate cost per unit of output and loss. And how are you going to do that? See, the first step is done. We have done this. Okay, this is done. Now the second step, calculate cost per unit of output. How are you going to do that? You're simply going to take this formula and solve it. And what's the formula? Cost incurred divided by expected output. And we have been given in the sum that the cost incurred was $4,500 divided by 900 units. Why 900 units? Because that was the expected output. So the per
Cost of per output is $5 per unit. Okay. That's our second step done. Now, our third step. Calculate the total cost of output and losses. And how are you going to do that? You're going to do that by doing this, cost of output. So there you go. Normal loss is not assigned any cost. This is the rule. This is the rule. Normal loss is never assigned a cost. So cost of output, how much output was manufactured or how much output was made in reality, 860. Multiply by $5 gives you $4,300. Normal loss, there was 100 units of loss, but you're not going to bear any cost to it. You're not going to assign any cost to it. Why? Because that's the rule. Third, abnormal loss, 40 units multiplied by $5, 200. And that's how you get the total cost of output and losses. That's the third step. Ms. Tisha, can you please repeat from the second step because I got a bit confused. Okay, the second step, cost incurred, $4,500. It's given in the sum. It's given. So like it's a sort of formula? Yeah, you simply see over here in the example that the input to a process 1,000 units at a cost of $4,500. That's the cost. They are simply telling it to us. So we have to incorporate this cost into our output because we need to recover this cost from the customer. Yes or no? Yes. So 4,500, you are going to divide it by 900. Why? Because your normal loss was 10%. So your expectation was to produce 900 units. And therefore, you're going to divide the cost between 900 units and you get $5. But in reality, you were able to manufacture 860 units. So you're going to incorporate this cost into the 860 units because this is what you're going to sell into the market. And you need to recover the cost of 4,500, definitely. Sorry. Right? So that's what we did over here in the second step. And then in the third step, what we did, we tried to calculate the total cost of output and losses. And how we did that, we multiplied 860 by $5 because that's what we want to recover from the customer. Then we need to add up our normal loss, but it is the rule that we do not assign any cost to the normal loss. And therefore we wrote 0 over here. And abnormal loss, we definitely will be adding the cost of our abnormal loss 200. So normal loss हर question में 0 होगी क्या? Yes. नहीं ना? Yes. हर question में 0 होगी. Yes, that is okay. That is the rule. This is the rule. Okay. Why? All right. Can you tell me why? Can you figure out why? Because हमारे पास नीचे abnormal loss हुआ तो I guess that is why. No, because normal loss was expected. हमारी expectation थी already. तो जिसके लिए okay. लेकिन हमारे पास तो सिर्फ उसकी एक्सपेक्टेशन थी ना, हमें ये तो नहीं पता था कि वो कितनी होगी. नहीं, हमें पता होता है. अब जब आप चाय बनाते हो, आपको अगर मम्मा बोलेंगे अब घर में मेहमान आ रहे हैं, 4 लोगों की चाय बनाना, 4 कप, तो आपको अंदाजा होता है कि 4 कप बनाने के लिए मुझे कम से कम 5 कप के बराबर पानी दूध डालना पड़ेगा, तब जाके 4 कप. ओके. हाँ, इसका तो होता है. तो फिर इसी तरह हर कंपनी को अपना अंदाजा होता है कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाने में कितना एक्सपेक्टेड है कि मेरा लॉस हो जाएगा रॉ मटेरियल प्रोसेस में, उसको भी अंदाजा होता है. तो वो उस हिसाब से अंदाजे के मुताबिक 100 यूनिट्स उसने हिसाब लगाया कि मेरे जाया हो. 100 यूनिट जाया हुए, मगर एबनॉर्मल लॉस भी हुआ, 40 यूनिट एक्स्ट्रा भी जाया हुए. क्यों जाया हुए? क्योंकि पता नहीं था कि मैं टीवी देखते देखते भूल जाऊंगी चाय का पानी चढ़ा के, और वो बस अब थोड़ा सा ही पानी रह जाएगा उसमें. 4 कप बनाने थे, अब सिर्फ 2 कप चाय बन रही है. क्यों? क्योंकि मैं टीवी देखने लग गई या मैं मेहमानों से बातें करने लग गई. तो दैट वाज एबनॉर्मल.
एबनॉर्मल लॉस ना कोई गलती की वजह से होता है या लापरवाही की वजह से होता है, या फिर हो सकता है कि लॉकडाउन हो गया अचानक से, पता नहीं था मुल्क के हालात ऐसे हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से एबनॉर्मल लॉस हो गया। अर्थक्वेक आ गया, आग लग गई, या फिर लेबर ने छुट्टी कर ली, हमने सोचा नहीं था कि लेबर जो है एकदम से छुट्टी कर लेगा, या मतलब उसके मतलब लेबर के तमाम स्टाफ को फूड पॉइजनिंग हो गई, उन्होंने कल हमारी फैक्ट्री से खाना खाया था या चाय पी थी, तो बस उसके बाद से फूड पॉइजनिंग हो गई सारों को। तो ये पता नहीं था किसी को, अचानक से हो गया, जिसकी वजह से ये लॉस हो गया। सो नॉर्मल लॉस का हम कभी भी कॉस्ट असाइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी उसकी कॉस्ट को सोच के हम मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किए। क्योंकि मुझे पता था कि बिरयानी बनाने में ऐसा होता है कि कभी प्याज जल जाते हैं, कभी ऐसा भी हो जाता है, तो मुझे पता था, मैं एक्स्ट्रा प्याज ऑलरेडी बाजार से खरीद के लाई थी मुझे। सही। तो इसलिए इसका कॉस्ट आप इनकर नहीं करोगे, मगर एबनॉर्मल का पता नहीं था तो आपको करना है इनकर। ठीक है जी। तो दिस इज योर थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, कंप्लीट अकाउंट्स। और कंप्लीट अकाउंट्स की शक्ल क्या होगी? जैसे हमने पहले भी देखा, प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे तमाम इनपुट और यहाँ पे तमाम आउटपुट। अब आप यहाँ पे जरा गौर फरमाएं कि आउटपुट में नॉर्मल लॉस भी गिवन है 100 यूनिट्स, मगर अगेन $0, नो कॉस्ट हाँ साइंड, एंड देन आउटपुट 860 मल्टीप्लाई बाय 5 4300, अब नॉर्मल multiply by 5 200, and that's how you solve your process account. And सही। normal loss account, you create an abnormal loss account and you pass this or transfer this amount over here, and from here where will it go? It will be recorded in the statement of profit and loss. ओके। That's सो how इस it is. अगर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अगर ये प्रोसेस अकाउंट्स में ये जो फॉर्मेशन अगर इसकी आती है, तो सिर्फ एक हमारे पास कोई चीज गिवन नहीं होगी या हमें पूरा खुद बनाना होगा? पूरा खुद नहीं आएगा, मगर हाँ एक आधा चीज इसमें से मिसिंग होगी। मे बी दिस फिगर इज मिसिंग, maybe this figure is missing, okay, or maybe they don't even ask you about process account, they just ask you to solve this step. They might ask you to solve the step 2, you know, anything they can ask out of this big chunk. Okay, all right. So now now we are going to see part A is solved. Part A is solved, in which 860 units were the output. Now in part B, they are saying 920 units is the output. How are you going to solve it? Again, the first step, determine output and losses. So output is 920, actual loss is 80, which means that actual loss is less than the normal loss, because normal loss was supposed to be 100. But in reality, the loss is only 80, and therefore there is an abnormal gain, which is 20 units. Now, this part B is an example or demonstration of how you're going to handle or deal with abnormal gain. So here we again follow the steps, calculate cost per unit of output and losses, 4,500 divide by 900 units, which gives you $5 per unit. Okay, and then what you're getting, total cost, you're finding the total cost 4,600, normal loss 0, abnormal gain, you're deducting it, and then you're getting 4,500. Next, complete accounts, same way, debit side, all the income, all the input, and on credit side, all the output. Losses will be recorded on the credit side, whereas the gain is being recorded on the debit side. Okay, and then abnormal gain, you're making a separate account for it. You're going to record it, statement of profit and loss on debit side, process account 20, credit side. Is this clear? Yeah. Okay. But I'm still having a look on the first step of part B. First step of part B. Yeah. First step, what did you not understand? Like जैसे कि मैंने अभी बुक में देख रही हूँ, तो एक्चुअल लॉस मतलब डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया है। तो ये है कि पहले वाले स्टेप में हमारे पास 860 था एंड 140 हमारे पास यूनिट्स थे जो हमने वो करा, लॉस था हमारा। मतलब कंफ्यूजन फर्स्ट स्टेप में ही हो रही है। No, सेकंड
समझ I आ got गया। it. I got it. It is not about presentation, Kinza. It is not about presentation. It is about you find out the output and losses. You find the units. And here they have presented in this way. Over there, they have presented in a different way. That's all. That's the difference. But no other Oh, apart from that. The same data has been given here. The same data content has been given in the step 1 of part A. Okay. So the content is the same, the way is the same. You have to find out the units of output and losses. The only difference is the presentation. Presentation does not matter in the first 3 steps. The presentation okay. matters in the process account. In this. Yeah, obviously इसमें तो फिर प्रॉब्लम आएगी, पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। Yes. ठीक है जी. Okay, so here we have the sum and I would like you to try this out. Okay. Following the same steps of process account.
For Y, the answer is 500. For Z, its answer is 60. But yes, I'm a bit confused कि loss होगा या gain होगा. Okay. How did you do it? Did you find out the first step? Did you do the first step? 20,000 for Y, 20,000 हमारे पास जो material input था in kg. Okay. और जो है 5% जब मैंने निकाला उसका तो it was 1000. मैंने 20 को 1000 से subtract किया, I got 19,000. उसमें से मैंने subtract किया output, तो 500 मेरे पास आया Y के लिए. And for Z बिल्कुल भी एक चीज मैंने की. 28,000 था मेरे पास, 1967% उसका निकला. So the answer was, मैंने उसको subtract किया, it was 26040. फिर उसमें से मैंने जो है वो subtract किया 26100 जो कि हमारा आउटपुट है इन kg. तो मेरे पास आया यूं -60, मतलब मेरी कैलकुलेशन जो मैंने की थी. लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया है कि लॉस कौन सा था और गेन कौन सा था. So your calculation is correct and you found the correct. या But ये समझ नहीं आया कौन सा लॉस है कौन सा गेन है. Okay, so you have to just see. देखो यहाँ पे 20,000 तुम्हारा इनपुट है, 5% is the expected loss which is 1,000. अब देखना है कि 1,000 से ज्यादा लॉस हुए कि कम लॉस हुए. अगर 1,000 से ज्यादा लॉस हुए so that is abnormal loss. और अगर 1,000 से कम लॉस हुआ है तो that is abnormal gain. Because 1,000 is your normal. 1,000 is your normal. अब नॉर्मल से अगर कहानी ऊपर जाएगी तो इट विल बिकम एबनॉर्मल. और अगर 1,000 से कहानी नीचे जाएगी तो इट विल बिकम एबनॉर्मल गेन. सो दैट इज व्हाट यू नीड टू चेक आउट कि तुम्हारे इस फिगर से तुम्हारा जो अगला फिगर है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, जो एक्चुअल मतलब अमाउंट है. Okay, so the expected output was 19,000 and over here the expected output was this. मगर actual output कितना बना? 18,500, which is less. That loss ज्यादा हुआ. तो loss ज्यादा हुआ तो मतलब 500 का abnormal loss. ठीक है. और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमने सोचा कि इतना बनाएंगे मगर actual में ज्यादा बना. यानी कि इससे कम, इस loss से कम हुआ है loss. So that means this is your gain. Are you getting the? Yeah, a bit, not Yeah. properly. Okay, so अब इसको आप दूसरे अंदाज से देखो. चलो, एक तो मैंने बोला ये 1,000 तुम्हारा नॉर्मल है, ये तुम्हारा बेंचमार्क है. इससे ऊपर अगर हुआ तो एबनॉर्मल लॉस, इससे नीचे हुआ तो तुम्हारा एबनॉर्मल गेन. अब यहाँ पे और भी ज्यादा दूसरे तरीके से आप इस तरह भी देख सकते हो कि एक्सपेक्टेड आउटपुट. My expected output was 19,000. My expected output was 19,000. मेरी एक्सपेक्टेशन से अगर तो परफॉर्मेंस कम हुई है तो मतलब लॉस, और अगर मेरी एक्सपेक्टेशन से परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी हुई है तो मतलब गेन. मेक सेंस? मेरे एक्सपेक्टेशन से अगर मेरे मार्क्स F2 में बड़े अच्छे आ गए हैं तो इज इट अ गुड न्यूज और अ बैड न्यूज? अच्छी बात है. अच्छी बात है. 80% एक्सपेक्ट किया था मगर आ गए 85, तो अच्छी बात है ना, हो गया ना 5%. मगर अगर एक्सपेक्टेशन थी 80% और मेरे इन रियलिटी आए हैं 70%, तो अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है. बुरी बात है. सो दैट बिकम्स, दैट 10% बिकम्स माय लॉस. दैट इज व्हाट Okay, now I got it. Okay, Now it's clear. now over here, this, try this out. Okay.
इस क्वेश्चन में वीक 2 एंड वीक 3 अलग अलग कैलकुलेट होगा ना? या पीरियड 3 एंड पीरियड 4. ओके. Miss Isha, I'm not getting it. Okay, so during a 4-week period, period 3 cost of input to a process were 29,070. Input was 1000 units, output was 850 units, normal loss is 10%. See, whatever you do, whatever you read, you need to follow the steps. Step 1 is very easy. Step 2 is even easier. What you have to find out in step 1? Determine output and losses. Output is 850 units. Normal loss 10% of 850 is how much? You have to find it out. It has to be, I think, if I'm not wrong, 85. Okay, 85 is the normal loss. And then what are they saying? They're saying, no, not 10% of 1000. 10% of 1000 is 100 units, right? 100 units is the normal loss. And according to the normal loss, the expected output becomes 900 units. But in reality, they produced 850 units. So which means that 50 units becomes your abnormal loss. Am I wrong? I didn't got it. नहीं समझ आया. बेटा जब भी कोई प्रोसेस कॉस्टिंग का सम आता है आपको सबसे पहला स्टेप 1 करना है और स्टेप 1 में क्या बोलते हैं कि अपने आउटपुट और लॉसेस का पता करो. तो आउटपुट और लॉसेस का पता करना बिल्कुल सीधी सी बात है कि 1000 यूनिट्स इनपुट है
इस पे नॉर्मल लॉस 10% का आया है, तो 10% ऑफ योर इनपुट इज 100 यूनिट्स विच इज योर नॉर्मल लॉस. And they are saying that actual output was 850 units, which means there is 50 units of extra loss which will be counted as abnormal loss. यहाँ पे हमने बैठे बिठाए सिर्फ सम पढ़ के ही पहला स्टेप सॉल्व कर लिया. आउटपुट भी डिटरमाइन हो गया, लॉसेस भी डिटरमाइन हो गए. ठीक है, ये बात समझ आई स्टेप 1. इसमें मुझे ये जो एबनॉर्मल लॉस है ये समझ नहीं आया. Okay, so you have 1000 units of input and they are saying the normal loss is 10%. So 10% of 1000, how much, Kinza? Was 100. Yeah, it's 100. When you deduct it, how much you get? 900. 900. This is your expected number of units to be produced, yes or no? Yes. Yes, but in reality, how much did they produce? It produced 950. What is Nine, this? 850. Yes. 850. Okay, so now they produced in reality 850. So how much did they actually, incur an extra loss? 50. 50. So what will this be called? Abnormal loss. Sorry. Yes. So same thing is happening means the same thing is happening again and again in all the example sums. You just need to follow the steps. Okay, don't get confused. Just follow the steps. Find out your output, find out your losses, how I've shown you once again, and you have seen it in the previous sums as well. Now, once the step 1 is solved, you can easily go on to the step 2. Step 2 is to calculate cost per unit of output, which is 850, and of losses, which is 50. Because this cost will be considered as 0, right? So how are you going to calculate the cost per unit? Take the total cost divided by the expected units. You will get your answer. या मुझे सेकंड थर्ड में कोई प्रॉब्लम, बस फर्स्ट में ही मैं कंफ्यूज हो रही हूँ. Okay, Ji, now you can continue. Yes.
वीक 3 एंड वीक 4 वाले दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। क्या आ रहा है? वीक 3 का आ रहा है 29070 और वीक 4 का भी 29070। हाँ सही है। 290 सही है। ये कॉस्ट ऑफ इनपुट। ये है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप देखो दोनों सेम है, सिर्फ फर्क इतना सा है कि ये लॉस है और ये गेन है, खत्म बात। हाँ। ठीक, then the process account goes as it is। ठीक है, कोई सवाल आता? नहीं, मैं I ये वाला would खुद सॉल्व कर। yeah, I would like you to try this out at home। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस बाकी के जितने रह गए हैं सब घर पे ट्राई करना है आपने। ऑलराइट, जस्ट एडिंग ऑन वन मोर थिंग, स्क्रैप वैल्यू। लॉसेस विद स्क्रैप वैल्यू, डेफिनेटली अब जो लॉस है उसको आप रखोगे नहीं ना सजा के घर पे, उसको डिस्कार्ड करोगे। तो जब आप डिस्कार्ड करोगे इट विल हैव अ वैल्यू व्हिच इज नोन एज स्क्रैप। How to deal with this scrap value? So how you are going to deal with the scrap value? The scrap value of normal loss is usually deducted from cost of materials. This is the rule। नॉर्मल लॉस जब भी आप बेचोगे उसका स्क्रैप वैल्यू को आप कहां से डिडक्ट करोगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल में से डिडक्ट करोगे। एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू जो आपके पास आएगी उसको बेचने के बाद उसको क्या करोगे? सेट ऑफ अगेंस्ट इट्स कॉस्ट इन एन एबनॉर्मल लॉस और गेन अकाउंट। यानी कि एबनॉर्मल लॉस या गेन में से जो भी स्क्रैप वैल्यू आपकी आएगी उसको आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल से डिडक्ट नहीं करना, बल्कि प्रोसेस अकाउंट में जब आप खोलोगे ना एबनॉर्मल लॉस अकाउंट तो वहां पे सेट ऑफ करना है। ठीक, तो ये दोनों रूल्स हैं और ये दोनों रूल्स याद होने चाहिए। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कैसे भाई। ये आपका सवाल है। 3000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल आर इनपुट टू अ प्रोसेस। मटेरियल की कॉस्ट ये है, कन्वर्जन कॉस्ट ये है, नॉर्मल लॉस 20% ऑफ इनपुट, आउटपुट इज 2000 यूनिट्स। पहला स्टेप, डिटरमाइन आउटपुट लॉसेस। कैसे करें? 2000 यूनिट्स आउटपुट है, नॉर्मल लॉस 20% ऑफ इनपुट कितना होता है? 3000 का 20% कितना होता है? 600 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद आप अब नॉर्मल लॉस चेक करोगे जैसे कि यहाँ पे हमने किया। So you have input 3000 units, normal loss is 600, expected output is 2400 units, actual output is 2000। So therefore 400 units क्या हो गए हैं? Abnormal loss हुआ। First step is simple as it is। Second step क्या किया हमने? भाई स्क्रैप वैल्यू भी तो है क्योंकि यहाँ पे सम में गिवन है द यूनिट्स ऑफ लॉस कुड बी सोल्ड फॉर $1 ईच। तो अब क्या करें, इसको कैसे डील करें? सेकंड स्टेप में कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट एंड लॉसेस। स्क्रैप वैल्यू फॉर नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस को जब हम बेचेंगे तो हमें स्क्रैप वैल्यू मिलेगा $1 के हिसाब से, तो विच इज 600। वाई? क्योंकि 600 यूनिट्स वर द लॉस, नॉर्मल लॉस। स्क्रैप वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस 400 मिलेगा। टोटल स्क्रैप कितना हो गया? 1000। अब क्या किया? कॉस्ट ऑफ पर एक्सपेक्टेड यूनिट निकालना है, तो 2400 हमारा एक्सपेक्टेड यूनिट्स थे, उससे हमने किसको डिवाइड किया? अल्लाह भला करे, आपकी कॉस्ट 11700। 11700 माइनस क्या किया? 600। 600 क्या है? आपका नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू, जो कि रूल है कि नॉर्मल लॉस के स्क्रैप वैल्यू को आप डिडक्ट करोगे मटेरियल की कॉस्ट से, जो कि हम कर रहे हैं, प्लस कन्वर्जन कॉस्ट divided by 2400 as it is, $7.25। That's your cost per expected unit। यहाँ तक बात क्लियर है कि नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू को कैसे डील कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं?
फिर टोटल कॉस्ट निकाल ली अपनी, टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट एंड लॉसेस, आउटपुट निकाल लिया 2000 मल्टीप्लाई बाय 7.25, 14,500। स्क्रैप वैल्यू प्लस किया, लेस अबनॉर्मल लॉस 2,900, आपका अल्लाह भला करे 18,000 टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट और लॉसेस मिला के आ गई। प्रोसेस अकाउंट में क्या कर रहे हैं, प्रोसेस अकाउंट में एज इट इज जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। नॉर्मल लॉस हमेशा हम यहाँ पे 0 लिखते थे, मगर 0 के बजाय अब चूंकि स्क्रैप वैल्यू आ गई है तो हम स्क्रैप वैल्यू लिखेंगे। ठीक है जी, और फिर बाकी का सब एज इट इज। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में जो एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू है वो यहाँ आएगी 400, और स्क्रैप अकाउंट भी आप अलग से खोलोगे जहाँ पे आप नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। ये हमेशा क्रेडिट साइड पे ही आएगा स्क्रैप अकाउंट का ये जो है। एबनॉर्मल लॉस के लिए यहीं पे आएगा। ठीक है, ये रूल है, एबनॉर्मल लॉस का ये रूल है कि स्क्रैप वैल्यू उसकी यहाँ क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल लॉस का यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। सो फॉलो द फॉर्मेट एज इट इज। ठीक, यहाँ तक क्लियर है स्क्रैप वैल्यू की डीलिंग कैसे हो रही है, दोनों की, नॉर्मल की और एबनॉर्मल की। नॉर्मल का हमने यहाँ कॉस्ट में से डिडक्ट किया है, एबनॉर्मल का हमने यहाँ पे बिल्कुल भी टच नहीं, छेड़ा नहीं है, सिर्फ सिंपल यहाँ पे अपना टोटल फाइंड आउट करने के लिए लिखा है बस। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे भी स्क्रैप वैल्यू का कोई जिक्र नहीं है एबनॉर्मल लॉस का, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे हमेशा हम 0 लिखते थे, मगर यहाँ पे चूंकि स्क्रैप वैल्यू है तो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू यहाँ लिखेंगे, एबनॉर्मल की हम नहीं लिखेंगे, एबनॉर्मल का खाता सिर्फ यहाँ पे खुलेगा। ओके, ठीक हो गई बात। अब यहाँ पे ये सवाल है, सही। इसको भी आपने घर पे ट्राई आउट करना है, क्योंकि ये खासे लंबे सवाल है, इसको तसल्ली से आपने पहले सिंपल सवालात की प्रैक्टिस करनी है, फिर आपने स्क्रैप पे आना है। ठीक, अच्छा यहाँ पे हम अभी स्टॉप करते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें, कल क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे डिस्पोजल कॉस्ट से। ठीक है, सही। चलिए इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में मुलाकात होगी। हाँ, ख्याल रखें, हाफिज। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ठीक है।